नमो नमः। आज भिडियो रही +3 थर्ड ईयर 6 सेमिस्टर पिलामानंक आज भिडियो देखिया पिला माने आपण मानक जो रही कोर 3 रे एसे बा प्रबंध तो पिला माने आज आम एसे को लेकिन आलोचना करवा। चलतु डेरी न करके भिडियो आरंभ करवा। आरंभ करने पूर्व कही रखुची जो मैंने भी चैनल रे न्यू अच्छा चैनल टी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे थे बेल आइकन टी दबाई दिंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन उपर प्रेस कर दिंतु ताकि मुझे बनई सो भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल जाव। भिडियो को लाइक कर दिंतु एवं सांगसाथी मान सहित सेयार करने जमारू भूलें। तो पिला देखिपे आम जो रही एसेटी भारते महाभारत तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिले जो आम रही भारते महाभारत आम सेमिस्टर को बहुत थर आसी एग्जाम रे तो समस्ते जो रही भारते महाभारत तार आंसर टी नहीं प्रिपेयर हूँ निश्चय आसो सेमिस्टर को। तो देखो कौन रही रामायणात् परम भारत वर्षे धार्मिक साहित्येषु महाभारत स्थान महतरम अस्य ग्रंथ सांध्यात्मिक सांस्कृतिक राजनैतिक धार्मिकाणं कारिक दृष्ट्वा महानुपजग वर्तते। भारतस्य भौगोलिक स्वरूपम अस्मात् ग्रंथात् प्राञ्जलेन समुपलभ्यते। राजवंशानां ऐतिहासिक विवरणी विशद भावेन अत्र समालोच्यते प्राञ्जलीक्रियते च। आध्यात्मिक दृष्ट्वा अस्य महत्वं सर्वाप्रगण्यम्। आध्यात्मिक ग्रंथरत्ना श्रीमद् भगवद गीता असैव महाभारतस्य अंगीभूता। अनया गीतया सह अनुगीता विष्णु सहस्रनाम भीष्मस्तवराज गजेन्द्र मक्षश्च अस्यांगत्वेन विराजन्ते। सांस्कृतिक महत्व क्रमेण तदानीन्तन भारतस्य सामाजिकी स्थिति अस्मत् ग्रन्थात् सुष्ठुः परिज्ञायते। समाजे प्रचलिताः रीतयः नीतयश्च अत्रैव परिष्कारेण विचक्ष्यते। भारतीयानाम् आदर्शाचार व्यवहाराणां विवक्षा शांति पर्वणि यथा समुपलभ्यते तथा अन्यत्रापि न दृश्यते। महाभारतस्य राजनैतिक विशेषण सुदूर प्रसारिणी पांडव धार्तराष्ट्रय मध्ये संघटित महाभारत समरम महाभारतस्य मुख्य कथावस्तु। अस्मिन् प्रबल संगरे सर्वेपि भारतीय राजनः संयुक्ताः परिशेष्य धर्मस्य विजयम् अभवत्। युधिष्ठिरः भारतस्य महाराजः अभवत्। अन्यायी कुरुराजः सुजधनः दुर्जधनः तस्य भ्रातृभिः बन्धुभिः समर्थकैश्च सह युधिनिपातितः। भगवतः श्रीकृष्णस्य सहायेन पाण्डवपक्षः विजयिनः सञ्जातः। एतथं तु महाभारतस्य मुख्य विषयः। महाभारते धर्मार्थ काम मोक्षस्य चतुर्वर्गस्य साधन संरक्षितं सः ग्रन्थः पंचम वेद रूपेण गृह्यते भारतीय जनै। अतः ऐसा लोकप्रिय कथा प्रचलित यत् भारते महाभारते नास्तिवत् भारते भारतवर्षे अपि नास्ति। अत्र यत् वर्तते तत् भारते हि वर्तते। तस्मादेव प्राप्यते अयं श्लोकः धर्मेन्द्र ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भारतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र जने हास्ति नि तत् क्वचित्। महाभारत रही श्लोकटी। तो देखो कौन कही ना महाभारतम सदैव सत्य संधानम ददाच नूतन सृष्टिम आकर्षयति प्रज्ञां सत्यम ज्ञानम च दिदधाति। अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं सूचयित्वा तत्रैवोऽर्ध कथ्यते अयं श्लोकः ज विद्या च चतुर्वेदान् सागापनिषद द्विजः न चाख्यानमिदं विद्वात् नैव स सांख्य विचक्षणः श्रुत्वा त्विदमुपख्यानं श्राव्यमन्यत् न रच्यते पुंस्ककिलगिरिं श्रुत्वा रुक्ष्वाध्वाख्यस्य भागिव। महाभारते जो रही आमर श्लोकटी रही महाभारते सामाजिक ज्ञानस्य सकल विभागः वर्तन्ते। वेद वेदांगानि पठित्वा यदि कोऽपि महाभारतं न पठति तदा तस्य जीवनम् अपूर्णं जायते। महाभारते वर्ण विषयाणां विविधता वर्तते। तत्र पुराणेतिहासः धर्मशास्त्रम् अर्थशास्त्रं च एकत्र दरीदृश्यन्ते। सांगवेदानां निर्देशः अपि अत्रैव साटापेन प्राप्यन्ते। तथैव उक्तं धर्मशास्त्रमिदं पुण्यमर्थं शास्त्रमिदं परं मोक्षशास्त्रमिदं प्रक्तं व्यासेन मितवृद्धिना। अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदाः सांगस्तथैकनु भारतं चैकतः स्थितम्। महाकवेः व्यासदेवस्य काव्यकला सदैव तुलनीया। पदविन्यास अनुसरणः सुमधुरः
प्रसाद गुण संपन्नश्च महाभारतं सुसधै समरं कृत विविधै छन्दभिवृतैश्च सुशोभितम् अत अयं ग्रन्थ विदुषामितीव प्रियं तद्यथा अलङ्कृतं शुभै शब्दै समय दिव्यमानुषै छन्दकृतैश्च विविधैरो नित्यं विदुषां प्रियम् अस्य ग्रन्थस्य प्राचीनतां व्यापकतां चपलक्ष्य महाकविना स्वयमेवाद्घोषितं सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीव्या भविष्यति पर्जन्य इव भूतानामक्षया भरतद्रमः व्यासेन महाभारतस्य अन्तिमभागे ग्रन्थस्य सारभूतत्वेन इत्थमेव कथय ऊर्ध्वबहुर्विरोमेश नैव कश्चित् सृगति मां धर्मादर्थश्च कमश्च सधर्मः न सेव्यते महाभारतं पर्यायत्रयेण विरचितमिति समालोचकानां मतं प्रथमतः जयकाव्यं ततः भारतकाव्यम् अन्तिमपर्याये महाभारतमिति पुनः व्यासः अनेक इति समालोचकाः वदन्ति परन्तु बादरायणः कृष्णद्वैपायनः जो व्यासः महाभारतस्य प्रणेता इति श्रुतिः बहुदिनात् अस्मिन् देशे प्रवर्तते निश्चयेन अयं महसः सर्वजनवन्दनीयः बहुभिः शुकविभिः व्यासदेवस्य यशः गीतम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिवान्द्रुरपरहरिः अभाललोचनः शम्भो भर्गवान् बादरायणः श्रवाञ्जलिपुटेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं जः तमहं रामकृष्ण कृष्णद्वैपायनं वन्दे तदुक्तं गोवर्धनाचार्येण व्यासगिरा निर्यासं सारं विश्वस्य भारतं वन्दे भूषणतैव संज्ञां यदङ्किता भारती भाति महाभारतस्यादिपर्वे उक्तं त्रिभिर्वर्षे सदत्थै कृष्णद्वैपायन मुनिः महाभारतम् उपाख्यानं कृतवानिव मुत्तमं व्यासस्य परिचयं दत्त्वा उच्यते व्यासं वसिष्ठनप्तार शक्तेः यत्र कल्पसं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपनिधिम् अतः व्यासः सर्वजनवन्द्यः पण्डितैः सम्मानं प्रदर्श्य स्वाधिम् उच्यते नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पोलारविन्दाय त्रिनेत्रजेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितः ज्ञानमयः प्रदीपः तो पिलामाने ए थिला हमर भारतीय महाभारत जो रही आमर एसे तो समस्ते निश्चय प्रिपेयर हुंतु ए क्वेश्चन आंसर को लेकिन निश्चय आसो सेमिस्टर को प्राय टाइम आम सेमिस्टर को पड़े जो क्वेश्चन टी भारतीय महाभारत तो ठीक अच्छे पिलामाने आम एतिक वीडियो एंड करवा।